Hello students, today in this video I am going to explain you chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which was written by Satyajit Roy. Before proceeding the chapter, first we will do the summary of the chapter. Summary: it was a habit of Bipin Chaudhary to stop on a book shop present in a new market to purchase the books of his interest. But one day he encountered with Parimal Ghosh, who had recognized Mr. Bipin Babu, but Bipin refused to identify him. As proof, Mr. Ghosh narrated him Ranchi incident, but Bipin Babu replied that he had never been to Ranchi and told that he also doesn't know Ghosh. So ये हैबिट थी बिपिन चौधरी की टू स्टॉप ऑन अ बुक, कि एक बुक स्टॉल पर रुकना जो न्यू मार्केट में है, हमेशा वो बुक्स परचेज करते थे अपने इंटरेस्ट की. एंड बट वन डे ही एनकाउंटर विद परिमल घोष, एक दिन वो परिमल घोष से मिलते हैं, हु हैड रिकग्नाइज हिम, जो उन्हें पहचानते हैं. बट बिपिन बाबू रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम, लेकिन बिपिन बाबू ने उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया. एज प्रूफ, मिस्टर घोष नरेट हिम रांची इंसिडेंट, बट बिपिन बाबू रिप्लाइड दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची. और मिस्टर घोष ने प्रूफ के लिए रांची इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन उन्होंने ये पहचानने से इनकार कर दिया बिपिन चौधरी ने परिमल घोष को. एंड टोल्ड दैट ही आल्सो डजंट नो घोष, और वह नहीं जानते घोष कौन है. लेटर घोष डिस्क्राइब हिम हिज पर्सनल डिटेल्स एज फैमिली, वाइफ, किड, दिनेश मुखर्जी, हिज बंगलो, बट बिपिन बाबू वॉज नॉट रेडी टू बिलीव. और बाद में परिमल घोष ने उसकी पर्सनल डिटेल्स भी बताई, फैमिली, वाइफ, किड्स, बट दिनेश मुखर्जी के बारे में, हिज बंगलो, उसके बंगलो के बारे में, लेकिन बिपिन बाबू वॉज नॉट रेडी टू बिलीव, लेकिन वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे. बिपिन थॉट ओवर इट. He was confused whether Ghosh was telling lie or he was losing his memory. Then he decided to ring Dinesh Mukherjee so that he could confirm the matter. So बिपिन ने बहुत सोचा. He was confused थे whether Ghosh was telling lie, कि वो सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं. और सो ही डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिंग अप करें, कॉल किया जाए दिनेश मुखर्जी को, सो डैट ही कुड कंफर्म द मैटर, ताकि उनको मैटर के बारे में कंफर्म हो. ही टॉक टू दिनेश, उन्होंने दिनेश से बात किया, बट ही आल्सो रिप्लाइड इन अ पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिवली रिप्लाई किया. रिकलेक्टेड ऑल अदर इवेंट्स, सारे इवेंट्स को रिकलेक्ट किया. एंड ही आल्सो हियरिंग ऑल हिज हेड बिगिन टू स्पिन, और उनका सर घूमने लग गया. नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड होम, जब घर पहुंचे फ्रॉम ऑफिस से, हिज सर्वेंट टोल्ड हिम दैट मिस्टर चुन्नी लाल वांटेड टू मीट हिम, चुन्नी लाल उनसे मिलना चाहते हैं. चुन्नी आस्क्ड हिम फॉर मनी, बट बिपिन बाबू रिफ्यूज. बिसाइड ही बिगेन टू कंफर्म अबाउट द इंसिडेंट ऑफ रांची, उन्होंने रांची इंसिडेंट को कंफर्म करने की कोशिश की. एंड हिज लास्ट जॉब टू वेरीफाई इफ ही वाज लॉसिंग मेमोरी, कि क्या वो अपनी याददाश्त तो नहीं खो रहे हैं. और बट चुन्नी लाल आल्सो रिप्लाई पॉजिटिवली, उन्होंने भी सही जवाब दिया. नाउ ही कॉल्ड फॉर डॉक्टर परेश चंद्रा, हु गेव हिम फॉर रेमेडी. अब उन्होंने परेश चंद्रा को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया. एट द एंड बिपिन बाव हिमसेल्फ वेंट टू हुड्रो, और वो हुड्रो गए, बट कुडन रिटायर हिज मेमोरी, लेकिन उनको फिर भी अपनी पुरानी बातें याद नहीं आई. व्हेन ही रीच हुड्रो ही फेल्ट अनकॉन्शियसनेस, उन्हें अनकॉन्शियसनेस फील हुआ वहाँ पे. ही रिटर्न कलकत्ता वापस आया, फीलिंग दैट ही विल लॉस एवरीथिंग, कि सब कुछ खो दिया. देयर इज़ नो होप लेफ्ट इन हिम, कि कोई भी आशा की किरण अब नहीं है. फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़ी देर बाद, बिपिन सर्वेंट ब्रॉट अ लेटर, उसमें लेटर लेकर आया उनका सर्वेंट उनके पास, विच वॉज डिस्क्राइबिंग चुन्नीज रिवेंज फॉर नॉट हेल्पिंग हिम इन एट टाइम ऑफ नीड. तो उसमें ये बताया गया कि चुन्नी ने किस तरीके से बदला लिया, कि जब उसको ज़रूरत थी तब उसकी हेल्प नहीं की. नाउ बिपिन अंडरस्टूड ऑल मैटर, उसे सब कुछ मैटर समझ में आया. व्हेन डॉक्टर चंद्रा अगेन कैम टू ट्रीट हिम, जब दोबारा ट्रीट करने आया, ही वॉज टोटली सरप्राइज व्हेन बिपिन टोल्ड हिम दैट ही वॉज बेटर नाउ, कि अब वो ठीक है. एंड ही जस्ट नीडेड अ पेन किलर एज ही इज़ फॉलन इन रांची, क्योंकि वो कहाँ गिर गए थे, रांची में. तो उन्हें समझ में आ गया था कि वो वहाँ गए थे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's New Market to buy books, crime story, ghost story and thrillers. So it was a routine for Bipin Chaudhary to stop at Kali Charan's New Market to buy books every Monday. And when he was on his way home from work, he usually bought books of crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week, and he bought at least 5 books to keep him occupied throughout the week.
for a week. He lived alone, was not a good mixer, had a few friends, and didn't like spending time in an idle chat. He lived alone. He didn't have many friends, so he was not very sociable person. He was not very interested in unnecessary chat and spending time to indulge in trivial issues and daily routine conversation which had no meaning. So today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters, and when he visited the shop, so as he felt that as if someone was looking at him, someone was staring at him continuously from a close quarter means minutely, someone is observing him minutely. So he turned round and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a silence. So now as he turned around to find who it was, जैसे ही वो मुड़ते हैं और देखते हैं who it was, so he saw a round faced, humble looking man who was staring at him, जो उसे देख रहे हैं, घूर रहे हैं. On seeing him, Bipin Babu made eye contact and the man started smiling and exclaimed that he didn't expect Bipin Babu to identify him, कि उसे उन्होंने पहचाना है नहीं पहचाना. I don't suppose you recognize me. So he thought that the Bipin Babu didn't recognize me. He didn't identify him. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We meet every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudra Falls. In 1958, in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. Ranchi. So, Bipin Babu asked the man. Bipin Babu ने man से पूछा, have you met before? They have met before. कि वो पहले कभी मिल चुके हैं. So the man looked greatly surprised, and the man had a surprised expression on his face. Yes, we had met every day, or for a whole week. But Bipin Babu didn't remind, and man had mad efforts to remind Bipin Babu who he was. I arranged for a car to take you to the Hudra Falls in Ranchi. So he told Babu that they had met each day for a week in Ranchi, and he claimed himself to be a Parimal Ghosh, और वो खुद को परिमल घोष बताते हैं. And even mentioned that he had arranged a car. उन्होंने एक कार भी अरेंज की थी for Bipin Babu to the Hudra Falls. बिपिन बाबू के लिए हुड्रा फॉल्स तक इन रांची में. इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष. रांची. सो ही सेड दैट ही मेंशन हिज नेम, एंड on hearing Ranchi, Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. So Bipin Babu realized that it was not him but the man who was mistaken. लेकिन ये man गलत है, because he had never been to Ranchi. Bipin Babu had never been to Ranchi. वो आज तक कभी रांची गए नहीं हैं. He had been at the point of going several times but never made it. So even though he wanted to visit Ranchi, वो रांची जाना चाहते थे, but had not been at the point of going there multi times, लेकिन वो नहीं जा पाए. He smiled and said, do you know who I am? क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? Thus with a gentle smile Bipin Babu asked the man से पूछा परिमल घोष से, if he really knew who I am, who I was. The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary? So, on hearing Bipin Babu's reply, the man started biting his tongue and raised his eyebrow. Now, while he said, do I know you? क्या मैं आपको जानता हूँ? He further added that he wondered if there is anyone who doesn't know Bipin Babu. कि कोई ऐसा भी है जो नहीं जानता हो कि बिपिन चौधरी कौन है. Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi. So again Bipin Chaudhary said, as he turned back towards the bookshelf, वो bookshelf की तरफ देखने लगे, and Bipin Babu told him that he was making a mistake, कि परिमल घोष आप गलती कर रहे हैं. वन ऑफन डस, जो हमेशा कोई ना कोई ऐसा करता है. वन ऑफन गेट कन्फ्यूज, बहुत सी बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. आई हैव नेवर बीन टू रांची, एंड ही एक्सक्लेम्स, बिपिन चौधरी एक्सक्लेम्स दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि वो अपनी लाइफ में अब तक कभी रांची नहीं गए हैं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड.
What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. So the man laughed at Bipin Babu's. परिमल घोष हंसने लग जाते हैं बिपिन बाबू के रिस्पॉन्स पे and didn't believe a word. Even what are you saying? क्या आपको याद है? He further elaborates how Bipin Babu had a fall in Hudro. कि किस तरह के वो फॉल वहाँ गए थे, कट योर राइट नी, और आपके राइट नी पर चोट लग गई थी. एंड द मैन हैड हेल्प हिम. आई ब्रॉट यू iodine and I had fixed up a car for you to go to Netaharat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. So even he even mentioned that he had cut his right knee and the man had helped him with iodine. He even mentioned that he arranged a car, उसने कार भी अरेंज की थी to go to the नटाहरट जाने के लिए the next day, but you couldn't, लेकिन आप नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, बिकॉज यू हैड अ पेन इन द नी. सो can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. So the man asked if he still doesn't recall anything from the trip. क्या अभी तक आपको याद नहीं है उस ट्रिप के बारे में? Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. So he said that Bipin Babu that he had come with one of his acquaintance. आप अपने एक रिलेटिव्स के साथ थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, who stayed with his sister, जो अपनी सिस्टर के साथ रुके थे. And you said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by bawarchi. Even you said that you stayed in a bungalow because you preferred having the meals prepared by a cook, by bawarchi, instead of having a hotel foods. And Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I'll tell you more. You always carried a bag with your books and at your sightseeing trips. Am I right or not? So वहीं पर he further mentioned, Bipin Babu mention करते हैं that the Bipin Chaudhary had a long argument about the moon landing. Remember? Do you remember it? I'll tell you more. You always carried a bag with your books. Even Bipin Babu always carried a bag of books whenever he went sightseeing on a trips. He always carried a bag of books. Even, am I right or not? So he again asked Bipin Babu if the details which he was giving, is it correct? So Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? So amazed by the prescribed details the परिमल घोष had given, जो परिमल घोष उसे बताते हैं, Bipin Babu asked him, और बिपिन बाबू पूछते हैं उनसे, and about the particular month, किस month की बात कर रहे हैं? In 58 he was talking about. So the man said October, and the man mentioned that he is talking about the month of October. No sir, said Bipin Babu, I spent a puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. So Bipin Babu claims that he spent his October that year attending a puja, कि उस साल उन्होंने अपना स्पेंड किया था अक्टूबर मंथ पूजा में विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में. एंड ही एश्योर्स द मैन दैट यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं, एंड विशेस हिम अ गुड डे, और वैसे गुड डे बोलते हैं. बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. इवन द मैन स्टूड स्टिल, वहीं खड़े रहे, एंड कॉन्टिन्यूसली ही वॉज टॉकिंग. वेरी स्ट्रेंज. One evening, I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children, that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died in sin, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. So, Bipin Babu, very strange. The man goes on to mention, वो सारी चीज़ें उनसे mention करते हैं. How unusual this is, because he even remember having tea with the Bipin Babu. Even उसे याद है कि उन्होंने विपिन बाबू के साथ चाय पी थी in a veranda of your bungalow, आपके ही बंगलो में. And where he told about his family, और विपिन बाबू ने अपनी फैमिली के बारे में बताया था.
The man gives minute details about Bipin Babu's family, and he said you had no children, and did he had no children. He once at that Bipin Babu told him that he had lost his wife 10 years ago, कि बिपिन बाबू की वाइफ की भी डेथ हो चुकी है 10 साल पहले, एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सन, एंड हिज ओनली ब्रदर जो उनका एक भाई है, ही वॉज also died in a mental hospital in Ranchi, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi, and that's why he did not want to visit the mental hospital in Ranchi. इसलिए वो mental hospital नहीं जाना चाहते रांची के. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. So Bipin Babu paid for the books. उन्होंने अपनी books के पैसे दिए and was leaving the shop, and he moved on his way out of the shop without saying anything. But meanwhile the man, the Parimal Ghosh, still he looked at him in utter disbelief. Utter disbelief, confusion, bewilderment, complete surprise. But the man, the Parimal Ghosh, looked at Bipin Babu in confusion.